अच्छा। एडवर्ड हैव अ नहीं सीट। बैठिए, बैठा दीजिए इनको। No. हाँ जी बताइए। ऑलराइट सर, देयर आर लॉट ऑफ केसेस। आई एम गोना स्टार्ट विद दी सबसे प्रॉब्लम हमारी जो चीज़ें याद रहती हैं। लेट मी टेल यू द राइट नाउ ईएमएस की डिटेल्स क्या चल रही है लॉस एंटोस मेडिकल ग्रुप की। और रिसेंटली डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स काफ़ी आई हैं रिगार्डिंग दिस रेट थिंग। आई जस्ट वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ द। आज अगर आप फ्री हैं तो आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। बताइए। ऑलराइट सर, तो बेसिकली हमारा जो केस है, रिसेंटली वी गॉट अ लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट्स, बहुत सारे केस रिक्रूटमेंट्स हुई हमारे पास, काफ़ी लोग आए, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारे डिपार्टमेंट के बीच में था, ठीक है, विच वाज अ इशू इन द फंडिंग्स, ठीक है, जो हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा था। वेदर इट वाज हमारी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग्स के ऊपर आ रही थी, ऑर्गेनाइजिंग अप सिटी इवेंट्स, और हम बाकी जो चीज़ें हम डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं रिगार्डिंग फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है, वे जो हमारे पास नहीं है अभी तक के लिए सर, ठीक है। जिसकी वजह से हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास अभी जो फंडिंग से प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जो डिपार्टमेंट को, पूरे डिपार्टमेंट को इश्यूज़ है सर। नेक्स्ट चीज़, जो अभी तक सर इसके अलावा जो है हमें स्टेट फंड, कोई नॉर्मली हमारे पास कोई स्टेट फंड की तरफ से स्टेट सपोर्ट नहीं आ रही, स्टेट सपोर्ट नहीं आ रही, विच इज़ आई थिंक, आई बिलीव, जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर रही है। राइट सर। नेक्स्ट Yep. चीज़ें आ जाती है, या नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, लोगों को अचानक आके जब आके उनको देखने कि इनको सैलरी कम मिल रही है, पीपल आर रिजाइनिंग। सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर हमारी डिपार्टमेंट, वेदर इट्स डॉक्टर्स डिपार्टमेंट और द ईएमएस डिपार्टमेंट, बोथ आर रिजाइनिंग। द बिगेस्ट इशू विच इज दी डेवलप, आपको मैं बता देता हूँ, ये है सैलरी क्या। आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। एक नॉर्मल ईएमएस पर्सन जो है सर, इज लाइक अर्निंग 7 hours पर आवर, $700 पर आवर, राइट। एक नॉर्मल, ही इज अ स्टेट एम्प्लॉय सर, ठीक है। और एक जस्ट फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सिविलियन जो प्राइवेट बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल वो कैफे और एनी हेज ऑटोस, दे आर अर्निंग 10,000 पर आवर, ठीक है। डॉक्टर्स जो है सर लाइफ सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, इज नो डाउट इन इट सर, लाइफ सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, बहुत टाइम से लोगों की रखवाली कर रहे हैं, ठीक है। दे आर अर्निंग नथिंग अबाउट इट, ठीक है, बिकॉज एवरीवन नोज, ठीक है, मनी जो है इज अ मेजर फैक्टर जो लोग काम करते हैं, वेदर इट्स डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मैकेनिकल कोई बिजनेस हो या कोई फूड वाला बिजनेस हो, इट ऑल अबाउट मनी। बट जो मेन फैक्टर आ जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल Trying to discuss 700, आप एक all साइड पे units, देखिए, $700 एक kindly बंदा 25 पूरी at सिटी 20. के पास जाता रहता है, And parking. पेशेंट ढूंढता रहता है, ठीक है। और एक बंदा सिर्फ मैकेनिक है, वो सिर्फ उसको 1 घंटा विदाउट डूइंग एनीथिंग, वो आई मीन कुछ गाड़ियों को पार्ट चेंज करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, दे आर अर्निंग $10,000। दैट्स व्हाट आई बिलीव, व्हिच इज टोटली अनफेयर फॉर द ईएमएस एंड डॉक्टर्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट चीज़ आ रही थी सर, जो अब हमारे जो इवेंट्स थे रिगार्डिंग द फंडिंग प्रॉब्लम जो हमारे पास आई, एज यू आस्क्ड मिस्टर एडवर्ड के आप चार्ज लो पेशेंट को, ठीक है, आप चार्ज लो, पेशेंट से चार्ज लिया करो। मैं अब प्रॉब्लम्स वही है, हमारे पास मेडिकल सप्लाई की शॉर्टेज हो चुकी है सर, हमारे पास कोई मेडिकल सप्लाईज नहीं आ रही, विच इंक्लूड द मेडिसिन, ठीक है। वी आर टू बी ऑनेस्ट लैकिंग आपका विद द मेडिकल फार्मेसी सप्लाई। अभी तक सेटअप नहीं हुआ? नहीं है वो नहीं सर, सर। अभी तक नहीं वो सर हुआ, ठीक है। Okay, I last time I heard it was in process, by the way. I'll get it confirmed सो from सो ये state. नेक्स्ट वही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जो है Okay, अभी जो मैं आपको कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन बता देता हूँ। We'll give you a जी weekly funding, ठीक है? आप लोग आपका बजट मेरे को बताइए, उस हिसाब से आपको फंडिंग मिल मैं जाएगा, आपको वो ठीक है? सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ, आप फिर आपको आइडिया हो जाएगा कितना फंडिंग से क्या केसेस है, आपको आप खुद ही आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। पहले जो चीज़ है सर कि डिपार्टमेंट इवेंट्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मुझे एक अप्रोक्सीमेशन बताता हूँ। एक हम फायर ट्रेनिंग, जस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं किसी की, फ्लाइट सर्टिफाइड बनाना चाह रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो हमें एयरएक्स वालों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट हैव अ प्रोफेशनल पायलट्स जो एयरएक्स है प्रोफेशनल पायलट्स, राइट सर। तो हमें एयरएक्स वालों के पास जाने का, उनकी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग है, वी डोंट नो एक्जैक्टली अमाउंट ऑफ दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग, बट देयर माइट बी सम काइंड ऑफ लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली 5,000 एट मिनिमम हो सकता है ये सर, मिनिमम जो है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है उनकी लाइसेंसेस, वो 80,000 की कॉस्ट करती है सर, विच इज़ नॉट पॉसिबल सर विद इन द डिपार्टमेंटल, जो आपको मैं बता रहा हूँ जो हमारे पास आ रहे हैं चीज़ें। $80,000 पर फ्लाइट लाइसेंस, विच विल बी, आप एक देखिए एक साइड पे $700 कमा रहे हैं, एक एम्प्लॉय वो अपने पास गाड़ी नहीं ले सकते, तो एक बंदा क्यों एक फ्लाइट लाइसेंस के लिए, फ्लाइट सर्टिफाइड, वो भी डिपार्टमेंट के लिए, वो भी स्टेट के लिए काम कर रहा है, वो $80,000 अपने पैसे से क्यों खर्च करेगा। नेक्स्ट चीज़, डिपार्टमेंट को फंडिंग नहीं आ रही, डिपार्टमेंट में सर मैक्सिमम 2,19,000 है सर अभी तक के लिए, 2,19,000 विच इज ओनली जो रेवेन्यू जनरेट है विद इन द लास्ट, तो हमने डिपार्टमेंट अपने हमें हैंड ओवर किया 5 और 6 मंथ्स हो चुके हैं इसको, ठीक है। उसमें 2,10,000 हो रहे हैं, 220 जस्ट फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली। तो आप मुझे बताएं हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर द ईएमएस डिपार्टमेंट टू ऑर्गेनाइज सच इवेंट, अपने इंटर डिपार्टमेंट इवेंट्स वगैरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट उससे अगली चीज़ आ जाती है, हम रिसेंटली, आई मीन आई वाज ऑन एलओए में नॉर्थ अमेरिका के स्पेशलाइजेशन के लिए जब जा रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 2-3 महीने पहले, तो वी वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट अलॉन्ग विद की स्टोर सारा कुछ। एक इवेंट तो हमारे लिए कॉस्ट लाइक 300K तक तो पड़ता ही पड़ता है, एक जस्ट इवेंट कॉस्ट करने की, राइट। इवेंट कॉस्ट करना पड़ता है, और सेकेंडली जो सारी चीज़ें हैं, और वो हमारे लिए, हमारे जो अपने डिपार्टमेंट के जो फंडिंग्स हैं जो आई नहीं रही हमारे पास, हम जो पब्लिक ले रहे हैं, ठीक है, उससे पूरी नहीं हो रही, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। एंड लास्ट चीज़ जो आ जाती है सर, जो है बोनसेस का, तो अभी बोनस भी नहीं मिल रहे किसी डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज को, जिस वजह से लोग
वो है। और सेकंडली एक और पॉइंट हमारा ये है कि हम बेसिकली जो हमारे प्लेसेस हैं, वी आर ट्राइंग टू ओपन सम पर्टिकुलर प्लेसेस रिहैबिलिटेशन। अभी आपको पता है कि रिसेंटली लेजिस्लेशन पेट्स के रिलेटेड आ चुके हैं। वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्पेस फॉर पेट्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल क्लिनिक को यूज करते हैं, क्लिनिक जो हमारे सैंडी शोज में है, यहाँ पे लोग जो है वो, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो सैंडी शोज लॉस सैंटोस नहीं आते ट्रीटमेंट करने के लिए, वो सैंडी शोज में ही ट्रीटमेंट करते हैं। उनके लिए आर्गुमेंट क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे साइन बोर्ड सर लिखा वो हुआ भी लोग है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे एनिमल्स आर्गुमेंट्स को ट्रीट करते हो और यहीं पे हमको ट्रीट कर रहे हो। तो वो लॉस सैंटोस भी आना पसंद नहीं करते सर, जिसके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम है ये चीज़ कि हमें एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए जिसमें हम एनिमल्स वगैरह ट्रीट अप कर सकें, ठीक है। और आई थिंक सो एक रिहैबिलिटेशन, हमारे पास एक स्पेस चाहिए रिहैबिलिटेशन करने के लिए, हॉस्पिटल सर एक बिजी प्लेस है, बिजी है। तो रिहैबिलिटेशन करने के लिए हमारे डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट अभी वो अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी बिजी है, वो हॉस्पिटल में हैंड ओवर डील कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम रिहैबिलिटेशन वाला एक डिपार्टमेंट के लिए हमें एक जगह चाहिए, ताकि हम उसमें अपने बंदे जो अपने पीपल हैं जो अपने जो ऐसे केसेस आते हैं जिनको मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, या कोई ऑफिसर होते हैं जो आफ्टर कोई गोली लगने के बाद या गोली फायर करने के बाद कभी अपने आप को रिहैबिलिटेशन के अंदर या थेरेपी के लिए एडमिट कराते हैं अपने आप को, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उनके लिए स्पेसिफिक हमारे पास प्लेस नहीं है। इंस्टेड ऑफ राइट नाउ अभी हमारे पास जनरल वार्ड जो हमारा है, जो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, हॉस्पिटल सिविल मेमोरियल हॉस्पिटल, वो उनके सर कंफर्टेबल नहीं है। दैट्स वेरी, आप इफ यू वांट टू टेस्ट इट आउट, यू कैन टेक, आप अगर देखो सर, यू कैन विजिट आउट सर, राइट सर। राइट सर, आवाज आ रही मिस्टर डेनिकिप्स, आपकी आवाज नहीं आ सर रही। सर लास्ट में एडम सर से मिला था रियल एस्टेट जाके, तो आपको कॉल किया था मैंने उनको बोला था वो हॉस्पिटल के जो ठीक सामने बिल्डिंग है वो परचेज करने के लिए, तो उन्होंने उसका कॉस्ट मेरे को बताया था 4,50,000। एक मिनट, उनको एक मिनट, वो सोच रहे हैं उस रिगार्डिंग, एक मिनट रुकिए, उनको 2 मिनट दें, वो सोच रहे हैं कुछ इंटरनेट रिलेटेड। Sorry, I'm sorry for the delay. Yeah, यस सर। I missed the last 3-4 lines probably. So yeah, I we get it till the air license, the aircraft license. After that, you whatever you said, if there is any point I missed it. or something like Event, right? You said about event that it cost yeah, me 3 lakhs. we were trying to organize an event which was interaction with the public, know that basic aid about the basic first aids and all those stuff while they are self-transporting. So we were trying to do that, but unfortunately it wasn't possible for us because we were not able to catch up with the cost of the stuff, because we were trying to put the medicines in it and equipment and all those were costing like more than like 300k along with the management of the event. Like we have to, I mean, we delayed it as well because we were not having any options for that one. So other than this, we were trying to work with the opening the departments, because we were not having, as you might be knowing that we were having 6 departments, and recently regarding pets things and has been introduced, there's a legislation for that. So we don't have any space for that thing. Like we don't have any veterinary hospital, veterinary department where we can particularly check the patients, because as far it was with the Olivia, she tried to manage everything at the Sandy shows, but people of the Sandy shows is starting now starting to try argue with the people. I mean, argue with the EMS department that why are you trading the patients here? I mean, trading dogs here. It's already mentioned in the board that there's no animals allowed in this department, and Sandy shows people doesn't want to come to the Los Santos. So yeah, that's one of the biggest issues right now. We don't have any specific place for the veterinary cases. Other than this, there's a psychological. I mean, we don't have a psychological department for which we were already working with. Edward was dealing with one of the real estate agents. Adam, I think his name is Adam, right, Edward? Yes. Oh, right. मैं सबको So कॉल he किया was था trying. So yeah, he was trying to communicate with him, as he told that it is they have a beautiful place for the rehabilitation. They can do the construction work. It's already, I mean, it's they do have a building for those stuff, but yeah, it costs us. So that's a whole again issue. EMS department doesn't have any money for those stuff too, because I know there's a gun shortage these days going to be coming up right now. There might be cases that police officer might be having issues, psychological issues after shooting people or killing someone, or like something, or a person who's getting shot might be having psychological issues for those, or any drug cases. For example, a patient goes overdoses the drugs and he goes in a bad case, so we don't have any particular place for that thing. So even if we're trying to put that patient in the Simeon Memorial Hospital, it's not even possible for us to. I mean, so that he's not possible to patient to stay in the hospital because it's a lot of crowd in the hospital every day. I mean, it's very busy. I mean, Simeon Memorial Hospital is every time busy with the patient. So this is not a particular place for the psychological patients. So that's why we might be needing any department, any place where we can fit up the patients there for the psychological cases. Other than this, one of the another issue is that the fuel cost is. I mean, right now the state has, I think, it's a 20% tax, right, Edward? Yes. Yeah. Okay. So yeah, the state is having this 20% tax on the fuel things, and we don't have any particular things like we cannot. I mean,
we don't have a, like police do have a particular fuel station so that they can fuel it up, and we don't have anything for सब like बात तो to नहीं करना था, वो तो I उनका mean है to यार। support EMS employees to get free fuel like as it should be. That's what I believe as a state department. That's what I believe, that it should be having something like a services that should be offered by the state. You trying to get me, sir? Yep. Same goes with the food thing. Food thing also, even they are doing the EMS duty, they are not getting paid for the particular that what they eat and all this stuff, right? That's the whole issue. That's right now EMS department facing. That's why the EMS department is lacking with the numbers right now. They are lacking with the people. The people coming and resigning because they see that they are getting $700. Why they should join the EMS department? They are getting $10,000 per hour. More facilities that the people do have in the EMS department. Any other departments, like for example, you can go to the Hayes, you can go to the Uvu Cafe, you can go to the any other departments. They can get free facilities from there, and even not free facilities. Just like you can say they are having a lot of money, they can enjoy it without free facilities. That's the whole issues right now what we are facing in the EMS department. And that's why we are losing a lot of numbers these days, sir. Get it. So let's talk about solutions now, one by one. Okay. First, you need to craft a budget. Remove that air license or air training cost that you are saying $80,000. I'll talk to the AirX CEO or AirX management. I'll get it done for you. Second thing, you don't have to pay for the license. Basically, your doctors, if they're on duty, they just need the training. The training will be given by the AirX, probably with a free of cost. Okay. And thirdly, basically we'll do one thing. A person from your department will get the training from AirX, and it will be his job to convey that training to all the other participants or all the other trainees or all the other people in EMS. One or two persons will get a joint training together from the AirX, depending on whom you suggest. You send us the name, we'll schedule an appointment with the AirX, and we'll give these two people the training, and it will be their responsibility to whoever wants to get trained for the medical and fire rescue. They can train the other trainees or the doctors. Okay, how to fly a chopper and all. Okay, so these things. So I just need to know about something. Like for example, if we, after we get the training, just for example, me and Edward got the training. So if we try to train any employee from the EMS department, how will we approach it with flight license and stuff? I'm sorry, how we what? How we will be approaching to the flight license thing? You don't need a flight license. This is for the civilians. No, it's also important. Like for example, an officer sees me like flying a helicopter. No, they won't do anything. See, the thing is like you are an on-duty official. The police also flies their choppers. Okay, so they don't have any flying license or anything. You do it for your medical rescue. You give the call out. You put all the flight data whenever you are flying it. If the air traffic is there. What do you think? It's not. I feel like it's not ethical for the EMS department. I mean, the employee who's getting license for those. I mean, he's doing thing and he doesn't have a license. For example, that is for on duty. You're actually riding on duty chopper. You're not allowed to drive a commercial or a private jets or any private aircraft. You're only flying your official or whatever given to your government aircraft. For that, you don't need a license. That is for the civilian or the private aircraft to handle. You'll get all the training that is required to handle an aircraft. So don't worry about it. You'll know everything. And it will be perfect ethical. I'm giving you the words. Okay. So you won't need the license. You can just fly it directly. You'll have all your trainings done. If you want the training will be given to you, and you can pass on to all other people. Okay. Because I was trying. So if someone's tries to is able to fly certified. If someone is fly certified, so we can put their details in MW that he doesn't have license for that particular. Yeah. But he's fly certified for the EMS. Yep. Yes. That we can help you with. Secondly, this is flight ones is gone. Next, whatever the extra budget that you want for events or other stuff or medicines and everything, you provide me a draft or a proposal that this much amount we need, weekly basis or bi-weekly or monthly, whatever it is. You tell us that this much amount the EMS need to sustain the departments. Okay. And I think you guys have already a bank account. So yeah, I'll send the money to the bank account. Make sure only the high commands have the access, and you can transfer or you can access. send to the people. But whatever you send, make sure you transfer using your phone as a pay external, and whenever you're transferring to any other business or any other people. Okay. Sure. So that the bank records, there should be a bank record always. Yeah, there's all. I think so. If you do a bank transfer, it still has the bank records on it. Yeah, it is there, but try to use pay external only. Okay, got it. You don't have the access of the transfer, but try to use from the phone pay external, because it will come in the phone. In the phone there is a log section, so it will come. Okay, got it. Yeah, if you do normal transfer, it won't come in the logs. Okay, gotcha. And third, I think these two are the main problems that you are facing right now. One is aircraft and another one is budget. Anything else that I'm missing? Regarding your pharmacy. Regarding your pharmacy, I will talk to Adam. I'll see what I can do from my side. And probably you will be getting soon a pharmacy in your hospital. Sure. Okay. Pharmacy, rehabilitation, and then we comes with the veterinary department. Veterinary department, you can start with the department, and you can use the Sandy Shores Hospital. People are वहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, लोग उस पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हो तो हमको क्यों ट्रीट कर रहे हो, और अगर आप एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हो तो आपके हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ है नो एनिमल्स अलाउड इनसाइड द हॉस्पिटल. That
we are trying to do something. We're trying to remove सर that उसके लिए post मैं in एडम सर के पास गया था, तो मैंने उनसे बात की थी हॉस्पिटल के ठीक जस्ट सामने वाली बिल्डिंग को लेने के लिए। तो उन्होंने मेरे को कॉस्ट उठाई अच्छा। थी 4,50,000। तो उन्होंने बोला था I एक get बार it. आपसे बात कर लें, फिर देख लेंगे। I get it. I get it. Let me have a talk with Adam as well. या सर अगर वो बेस्ट प्राइस में मिल जाती है तो हम वेटनरी स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास रहेगा बहुत, हॉस्पिटल के सामने। As you know, mortuary is already deal to us, so that's why. हेलो मैडम, आप सिटी में हो ना अभी? अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये EMS का वो फार्मेसी का क्या हुआ? City में तो है? Yes sir. I'll talk to Adam today, ठीक है? Regarding those two things. One is your hospital and another one is your pharmacy. Okay. Okay. So these three things. Anything else, guys? I think so. We have missed the rehabilitation thing too. Rehab. Yeah. Yeah. I think there's already a rehab in their city. Yeah, Yes, we sir. don't have any. Yeah, we don't have any keys for that. We just item asked you. You need to buy that property for that because there's a and I just saw a thing which is a business. Person's सर rehabilitation रिहैब इज अ center. बिजनेस। Rehab is a business, particular business. Sir. सर जब तक वो हॉस्पिटल पे नहीं आता तब तक हम पेशेंट एडमिट नहीं कर पाएंगे। We don't have any things like if you Yes. have you can say access for that we can admit the patients. एंड सर that thing and get- सेकंड बिजनेस इज लिटिल पॉज एनिमल हॉस्पिटल, जिसके लिए मैंने एडम सर से बात किया था। that was actually the veterinary thing. यस Little pause. यस Little लिटिल पॉज Paws एनिमल Where हॉस्पिटल। is it? Where is Animal it? This hospital? Is actually located in the Sandy Shores nearby the Delaware Hills in front of the Harmony. Yep. That will be very far for us, but you know it will be good एडम if सर we से get बात हुआ था these. तो बोले इसको हम आपके हॉस्पिटल के नियर करा देंगे, बट उस बिल्डिंग का प्राइस बहुत ज़्यादा बताया उन्होंने, 4,50,000। अगर आप उस बिल्डिंग पे खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो। हाँ ठीक है, वो पैसे we'll see, we can provide it from the state, that is fine. You're doing something for the state will give you the money, that is not a problem. Problem is the rehab. Okay, the rehab you're asking for the keys. Okay, fine, I'll ask Adam if he can do for the keys we'll provide. Because we need सर to admit the patients आई हैव कीज। without सर रिहैब के कीज हमारे पास हैं, ठीक है, बट we इज don't अ have- we डिफरेंट बिजनेस। जब तक वो उधर रजिस्टर नहीं होता ना तब तक हम वो कर नहीं पाएंगे, जब तक हॉस्पिटल के नाम पे रजिस्टर नहीं होगा तब तक हम We पेशेंट don't- we एडमिट नहीं कर cannot- पाएंगे। we cannot. It's a kind of हम business. कीज we है, हम cannot ओपन admit कर somebody. सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं, बट किसी को एडमिट नहीं कर सकते। मतलब वो बंदा ओपन नहीं कर पाएगा ये बोल रहे हो आप, राइट? इनडायरेक्टली। सर उसको ओपन नहीं करना, बट हम अगर उसको एडमिट करना है, हमें अंदर रखना है, हाँ ठीक है, अगर वो कोई डोर खोलना चाहे तो वो नहीं खोल सकता। All right. उसका तो एक ही डोर है ना, बाहर का डोर, वो अंदर थोड़ी, अंदर कुछ है क्या? नहीं उसके सर, हाँ अंदर सर, कुछ है? सर अंदर बहुत प्यारा बना हुआ है सर वो। All right. So there's a one. I mean, we just need to have a key That proper must system be that we that. can admit the people. For example, if someone is living there, we don't have any record. We cannot show someone any records that who's admitted at that spot or something like that. So whenever he wakes up, he will be waking up there, sir. That's what he's trying to say. That's why we need. We do have a particular keys of the front gates, but we don't have any keys for. You can say we don't have any authority to put the patients right now because the whole system is not under us right now. Still, it's under the business just now. Yeah, sure. We'll see what we can do. Okay. और सर वेटनरी के लिए इसलिए गया था मैं एनिमल हॉस्पिटल के लिए उनके पास, बिकॉज K9 के रिपोर्ट सारे रेडी हो चुके हैं, तो उनके चेकअप के लिए हमको लोकेशन तो चाहिए, तो मैं सोच रहा था उनके आने से पहले मैं उसको रेडी करा और देता। कितना टाइम लगेगा आपको इंटीरियर वगैरह करने में? सर That's what we टोटल इट्स one would- सर एक दिन, 1 day या 2 days, 1-2 if days। you use ठीक है। use मैं full time आज ही 24 hour आप लोग हो ना अभी, मैं आज ही Yes, बात sir. करके आपको दिलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? Yes, ठीक है मैं भी कोई जा issue रहा हूँ नहीं। एडम से मिलने, ठीक है, वो कर देंगे। और आप लोग एक बजट प्रिपेयर करिए अपने Yes, ठीक है, हम department के लिए। प्रिपेयर सारे Yeah, कलेक्शन sure. करके आपको बता देंगे पूरे बजट से। थैंक यू सर। Yes, sir. ठीक है, आ जाइए। Thank बाय द you, वे sir. सर एक चीज मैंने पूछी थी लेके पहले, चलो सर। मेरे को। अच्छा सर, आई नीड टू नो अबाउट समथिंग, एक मिनट, आई नीड टू नो अबाउट समथिंग कि लाइक हमारे जो ईएमएस एम्प्लॉइज आते जाते रहते हैं, और इफ वी कैन एक्सेस द स्टाफ शीट के उसको ऐड और रिमूव करने की, बाकी sir. आपके पास अथॉरिटीज, दैट विल बी इजी फॉर यू। Yeah, that is a problem actually. आप staff में add नहीं कर पाएंगे. It is a very kind of a thing Okay, okay. which only some of the people have. ओके But I ओके, can help you to put strikes on them, which you can do. मैं एक्चुअली सोच रहे थे इफ वी कैन डू वन सर थिंग कि हम अगर आप हम हमें वो एक्सेस दे दें, एक हम सर उस- वो नहीं कर सकते तो स्ट्राइक का एक्सेस सर हो सकता है कि हम स्ट्राइक हाँ, strike आप everything- दे सकते हैं। ठीक है Yeah, सर, Yeah, lot of वो अभी कर numbers दीजिएगा। है। बाकी जो है ना कि जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, नए डॉक्टर्स, उनका एक पूरा लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। You send, yeah, I'll add it. यस You just make sure that their profile is already created Yes, on sir. the normal profile Yeah, section. हम बना के जो आ रहा है उसको बनवा के उधर भिजवा सर दें, उनका मैं हाँ, खुद हाँ। जाके बनवा रहा हूँ।